Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Hello, my name is Hrishikesh and you are watching the Mojo Story. Ukraine has turned into a war zone where Russia is bombing in the capital Kiev and Kharkiv, the second largest city of Ukraine. Lots of Indian students are also stuck in Ukraine, and according to MEA, more than 1,300 citizens has been evacuated till now. And now, before Indian embassy has released an advisory immediate leave from Kharkiv. Two Indian students joining us from Ukraine who are in Sumy University right now. The city share their border with Russia, and you all are in the eastern zone, right? Yes, sir. Yeah. Okay. So, what's the situation there, Eshika and Maria? As you shared with us that if you have to travel to the western zone where evacuation is taking place, you have to travel 12 to 1,500 kilometers. What's the situations there? As we are seeing from Kharkiv or Kiev, what's the situation where you are stuck right now? So presently we are in Sumy, and from here the Russian border is nearly around 40 to 50 kilometers away. So for now we have got an advisory, not an advisory, actually it's a plan that has been initiated by the embassy, Indian embassy officials to evacuate us through the Russian border. So it will soon be taking place for now because previously, as you said, that yes, it was quite difficult and next to impossible due to the blockage and the damage of the roadways and the damage and undergoing repair of the railway tracks because there was a difference of around 1500 kilometers from east to the western borders. So that's how the Indian government is trying us to evacuate us, the students of Sumy, via the Russian border. Okay, so MEA spokesperson Arindam Bagchi has done a press conference recently, and they have said that they are looking for an option to touch the eastern zone where you all are stuck. तो सिचुएशंस वहाँ कैसी है? जो सिचुएशंस हम इधर से देख रहे हैं वैसी ही है या फिर क्या सिचुएशन है? या फिर आपके जो दोस्त कहीं और भी फंसे हुए हैं वो आपसे क्या चीजें शेयर कर रहे हैं इस दौरान? Like, sir, we are constantly listening to the sounds of bombarding, gunshots, shellings. हमारी सुबह ही इससे होती है. Soon as we wake up, कहीं ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और स्टूडेंट इधर से उधर भागते रहते हैं. हमें मैसेजेस आते रहते हैं, सायरन बजते रहते हैं that get ready, you have to go to bunkers. हम लोग अगर हमें सोना भी है तो हम लोग रेडी होकर सोते हैं. और रात को तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉ निकाला है. लॉ के अकॉर्डिंग वी आर नॉट अलाउड टू टर्न ऑन आवर लाइट्स. स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ रहती है, प्लस हमें टॉर्च में खाना वगैरह बनाना पड़ता है और हमको सारा काम अगर रात को करना है, यू हैव टू कीप योर लाइट्स ऑफ. But then, sir, I would like to add one thing. As compared to the situations of the students in Sumy, हम लोग बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यूड या फिर बेहतर कंडीशन में हैं एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स इन खारकीव because they are facing extreme of the situation that is going currently, and the situation is actually tense as much as it is portrayed. But the only difficulty that comes when you are watching it on televisions and different news portals are, some are showing actually the genuine news and some are just Exaggerating. overhyping the things. But there is definitely a tense situation for the students in Kharkiv, and yes, we are always getting some sort of news each and every second day, because today also there was a death of another Indian student. Yeah. So that disheartened us, and of course, but the present condition of Sumi, yes, like in today as we woke up with the voice of the bombardings around. Definitely, ये बहुत दूर हुआ था, but it was so loud that we all woke up. But at the same time, sir, we do not want कि सुमी का कंडीशन भी कीव एंड खाकीव के जैसे हो जाए. ऐसा मोमेंट ना है कि एम्बेसी को ये बोलना पड़े कि आप प्लीज़ जैसे भी करके वहाँ से इवैक्यूएट हो जाइए, बिकॉज आफ्टर विद इन दिस आवर्स इसके बाद वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. ऐसे कंडीशन आए उससे पहले हम चाहते हैं कि हमें इवैक्यूएट किया जाए. बिल्कुल, बिकॉज सर सुमी में स्थिति तो काफ़ी स्टेबल है. जब भी हम दूसरे मतलब जगह के बारे में देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वी आर इन बेटर कंडीशन ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू देम.
हमें बंकर्स में अपनी ही सेफ्टी के लिए भेजा जाता है, हम उसके बाहर आ जाते हैं। मारिया ने जैसे शेयर किया कि हम सब अपनी सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अंधेरे में कर रहे हैं, दैट्स फॉर आवर सेफ्टी। बट सर, what we do not want to wait for the situation to be Yeah. worsened enough. हम यहाँ से जल्द निकलना निकलना चाहते चाहते हैं, हैं। and we believe in Indian government. As per as the advisory, it will come soon, and I think we will be soon evacuated from this place. Yeah. But we are also talking and uh, thinking on behalf of other students, those who are stuck in Kharkiv and other eastern border states or the conflicted areas. सर उन्हें भी हेल्प की उतनी ही जरूरत है जितने की हमें। So, the spokesperson Arindam Bagchi has said that there were more than 20,000 registered students and more than 17,000 has come out of Ukraine. So, मतलब कौन-कौन से ऐसे एरियाज में अभी स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं? शायद आपके ईस्टर्न जोन में ही हैं। सर जी। फंसे हुए हैं या मोर More स्टूडेंट्स आर students. स्ट्रैंडेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न Eastern बॉर्डर्स, border, yeah. जहां से इवैक्यूएशन हो रहा है दैट इज रिगार्डिंग द वेस्टर्न Western border. बॉर्डर्स। So like the cities like Ternopil, Lviv, of course, Uzgorod. Uzgorod. Every country, every Yeah. city, they have So evacuated already. the students that are being evacuated are from those sites because the western border is very near to them. That is the condition. खारकिव, सुमी और ईस्टर्न साइड पे और जो भी सिटीज हो जहाँ पे भी बच्चे फंसे वो स्टिल वहीं पर है। खारकिव से काफ़ी बच्चे अपनी मर्जी से निकल गए। दे डिडंट वेट फॉर एम्बेसी टू आस्क देम टू लीव ऑल ऑफ अ सडन। उन लोगों ने शायद अच्छा डिसीजन लिया। मेरा खुद का एक फ्रेंड है, ही हैज़ रीच पोलैंड। वो एक दिन पहले निकला था। आई टोल्ड हिम पर्सनली कि डोंट डू सच स्टूपिडिटी बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जाकर फंस जाते हैं। वेट फॉर इंडियन एम्बेसी टू एडवाइस यू। बट ही सेड दैट हमारे हाथ में अभी जो भी करना है बिकॉज खारकिव इज अ मेन हॉटस्पॉट देखा जाए तो वहाँ पे कांस्टेंट बम्बार्डिंग रहता था। उसका जो फ्लैट था, अपार्टमेंट जहाँ पे वो रहता था, वो उसके अपार्टमेंट के विंडो से क्लियरली विजिबल था रशिया का बॉर्डर। वहाँ पे कोई भी बम्बार्डिंग वगैरह होता था उसको क्लियरली दिखता था। उनके बंकर्स वगैरह अच्छे थे इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रह सके। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला, जैसे ही ट्रेन्स वगैरह अवेलेबल हुआ, कर्फ्यू निकला, वहाँ से हटा दिया कर्फ्यू, ही इमीडिएटली इवैक्यूएटेड फ्रॉम दैट प्लेस। Yes, sir. I was looking at few of the Instagram stories of medical students from Ukraine. Uh, काफ़ी सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर मतलब आसपास से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिसिंग जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं? क्या आपके भी कोई फ्रेंड ऐसे जिनके आप टच में ना हों, ऐसी सिचुएशन अभी है? तो फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे एरिया या हमारे आसपास के लोगों में our friends are quite safe and settled in our own zones. But हमें डेफिनेटली न्यूज़ मिल रही है कि बच्चों से कांटेक्ट टूट रहा है, बच्चे मतलब कहीं ना कहीं गुम हो जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ ही दिन पहले जब हम लोग मतलब अपने बंकर्स में जाने के लिए वेट कर रहे थे हमारे हॉस्टल रूम्स में ही, one of my friends Farangi got a call from one parent from India, क्योंकि उनके बच्चे की उन्हें खोजबीन करनी थी और वो उसके बारे में ज्यादा जान नहीं पा रहे थे। तो या दिस इज हैपनिंग, डेफिनेटली हैपनिंग, बट फॉर्चुनेटली हमारे फ्रेंड्स एंड एवरीवन इज स्टिल सेफ एंड दे आर इंटैक्ट। बट इट इज़ हैपनिंग विद दोज स्टूडेंट्स जो बिना एडवाइस के अपने रिस्क पर जैसे तैसे करके निकल चुके हैं। लेकिन जो एम्बेसी के हेल्प से जा रहे हैं, गवर्नमेंट के हेल्प से जा रहे हैं, दे आर, आई गेस, दे आर सेफ एंड सिक्योर्ड। पेरेंट्स से बातचीत हो पा रही है इंडिया में? उनसे क्या चीज़ें, वो कितने वरिड हैं इस चीज़ को लेके? सर ऑल द टाइम दे आर हैविंग ओनली वन थिंग कि बेटा कुछ भी हो जाए, चाहे अगर चार्ज कितना भी कम रहे फोन में, बस एक वॉइस नोट ही भेज देना, एटलीस्ट टाइप करके भेज देना कि मैं ठीक हूँ। दिस इज अ कांस्टेंट फियर सर, एंड दैट हैज नो कंपैरिजन विद एनी अदर वरीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमें अपना फोन कांस्टेंट चार्ज रखना होता है। हमेशा वी हैव टू मेक श्योर दैट वी पोर्ट्रे अ स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर टू आवर पेरेंट्स एंड फैमिली, बिकॉज वहां पे दे आर फेसिंग सम अदर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. So yes, we are in constant touch with them. We do keep our phones charged. We are much more alert and much more responsible as such. हमारा As contact हो e- पा. as MEA saying that they are finding an option to evacuate students, citizens from eastern Ukraine. So कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों के साथ एम्बेसी का है? आप लोग किसी तरीके से कांटेक्ट उनसे कर रहे हैं? कोई रिस्पांस आ रहा है? इसको लेके क्या?
सर बात करें अगर हमारे कांटेक्ट की तो या हम लोग सब काफी ज्यादा कांस्टेंट टच में है एम्बेसीज के थ्रू ना। आई वुडंट से कि एक बच्चा है, every other individual, every other student is quite in touch, in constant touch with the embassies and the officials. तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे आप लोग बहुत खुश हैं और आप लोग चाहती हैं कि जल्दी से For जल्दी now, आप लोग इंडिया sir, लौटें। yeah, for now, yes, we are just होपिंग हम बोल hoping. सकते हैं दूसरे बच्चों के लिए, या वी आर वेरी हैप्पी कि वो लोग इवैक्यूएट हो चुके, दे आर सेफ नाउ एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न। Yeah, and much more people who are in the same situation as we are in. So हम लोग ऐसे मतलब खुशी से कहना चाहते हैं कि हमारी भारत सरकार ने हमें इमीडिएट हेल्प ऑफर की, और हम ये कहना चाहते हैं कि yes, our government turned out to be one of the best while rescuing the Indian students. Indian embassy is one of the embassy which is constantly working in this situation. देखा जाए तो दूसरी एम्बेसी, दूसरे सारे कंट्रीज के एम्बेसी ने ऑलरेडी हिम्मत छोड़ दी है कि वो कुछ कर सकते हैं, बट इंडियन एम्बेसी स्टिल ट्राइंग एंड उन्हीं की कोशिश की वजह से हम लोग यहाँ पर अभी भी सेफ सिक्योर, और हमारे पास अभी भी फेथ है कि हाँ वो आएंगे एंड दे विल रेस्क्यू अस। Yeah. अच्छा, रशियन बॉर्डर से बहुत ही आप जब नज़दीक हैं तो क्या उसको लेके अभी तक बहुत ज़्यादा कोई ऐसी मुश्किल आप लोगों के पास नहीं आई है? Sir, of course, as I told you earlier, मैंने जैसे आपको बताया था, there has been things happening around the city, but for the place where we are in, so we are staying in hostel. We are staying in university hostel. So, sir, a big shout out to our contractors for this reason at this moment, at this critical time. Maybe personally, that person would be a different to every second individual over here. But right now, हमें काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, हमारी प्रोटेक्शन उनकी प्रायोरिटी है, एंड हमारे अराउंड अगर ट्रूप्स है भी तो उन्होंने फिलहाल जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी डैमेज नहीं किया है। बट हाँ, मिलिट्री का आना जाना लगा रहता है, बिकॉज़ हम sure. बॉर्डर पर है, सो अगर उन्हें कहीं पे भी पास ऑन के जाना है देन पास थ्रू अवर सिटी फर्स्ट। यस। सो हम भी ये चाहेंगे कि बहुत जल्दी से जल्द इंडिया गवर्नमेंट एक्शन ले और जो ईस्टर्न पार्ट में आप जो स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं वो भी अपने घर की ओर लौटें, ताकि आपके जो फैमिली है वो बहुत इंतज़ार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जो मौजूदा स्थिति है फ़िलहाल यूक्रेन में, वो 2-3 सिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अभी ईस्टर्न जो यूक्रेन है वहाँ पे मौजूदा स्थिति उतनी ख़राब नहीं है। और एमईए के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन में फंसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें, और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी इंडियन सिटीजन यूक्रेन में ना फंसे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ जो फंसे जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक या जो स्टूडेंट्स हैं, वो जल्दी से जल्दी अब अपने देश लौट सकें। उनके फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है और वो भी चाहते हैं कि ऐसे टेंस सिचुएशन में वो अपने देश वापस लौटें। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया और इशिका आपका। थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.